Hello students. So as you know, we are doing tenses, and in present tense we have done present indefinite tense and present continuous tense. And today we will do present perfect tense and present perfect continuous tense. So before starting present perfect tense, I would like to ask you a question as always. Okay. So my question is, students, have you completed your written work? My question is, have you completed your written work? Yes, students. Okay. So your answer is yes, we have completed our written work. Okay. So such sentences where some work has been done or completed in the present time, जब कोई काम पूरा कर लिया गया है, ऐसे sentences में यूज होता है present perfect tense. Okay, so we always use here has or have plus third form of verb. Okay, students, so what is present perfect tense? Okay, so this tense describes an action, okay, when a process that has been completed in the present. Okay, and here we use singular subject plus has plus third form of verb plus rest of the subject, और plural subject के लिए have use करते हैं plus third form of verb plus rest of the sentence. Okay, and for I or you we always use helping verb have. Okay, अदरवाइज सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव. एग्जाम्पल, दे हैव वॉन द मैच एंड आई हैव परचेज्ड अ बुक, सीता हैज गॉन टू द मार्केट. ओके बेटा, ये जो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. ओके, तो ये एज ए थर्ड फॉर्म यूज होने के अलावा टेंसेस में ये एडजेक्टिव का काम भी करती है. लाइक हिज पेंटेड स्किन. ओके, स्किन कैसी है? पेंटेड. तो एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है ना, तो स्किन कैसी है? पेंटेड. यहाँ पे पेंटेड जो है ये एज अ पास्ट एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है और इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, जैसे क्लोज्ड विंडो. ओके, नेक्स्ट, as some action or process is completed, so this tense is called perfect tense. Okay, so with has, have, we use always third form of verb, and in negative sentence subject plus has or have plus uh, not plus third form of verb. Okay, so the train has not gone. Other example, you have not called him. Okay, तो यहाँ पे आपको not इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हैज और हैव के बाद स्ट्रक्चर में. ओके बेटा, so next is interrogative sentences. In interrogative sentences when we have to ask a question, so again helping verb जो है वो आगे आ जाएंगे, फिर subject. Okay, then third form of verb, then rest of the sentence, then question mark. Okay, अगर W word से start होने वाले question है, then first W word, then has or have, then third form of verb, then rest of the sentence. Example, have you gone to Delhi? Question mark. What have they eaten today? Here are some more example. Okay, to frame sentences with I or you will always use have. Otherwise, with plural have, and with all the singular subject you will use has. Okay, so in this way you will frame different sentences on your own. Okay, now is the time of doing some exercise on the basis of present perfect tense. First, I not work. Not work में हम कैसे लगाएंगे? I के साथ have use करेंगे. I have not work की third form worked. I have not worked today. Next, we by third form bought. We के साथ have. We have bought a new lamp. We not plan. We have not planned our holiday yet. Where be यहाँ पे कौन सा है? Have, has or have. Where have you been? He writes. He has written 5 letters. She not see. She has not seen film
फॉर लॉन्ग टाइम, शी सिंगुलर है तो हैज लगाया। बी यू एट स्कूल, हैव यू बीन एट स्कूल, ओके यहाँ बी कौन से वाला है, हैज और हैव वाला, ठीक है। स्कूल नॉट स्टार्ट येट, स्कूल हैज नॉट स्टार्टेड येट, ओके स्टूडेंट्स। These were examples of present perfect tense. So next is present perfect continuous tense. Okay. So as the name suggests, इसमें perfect भी है, continuous भी है। वो कैसे है? क्योंकि इसमें हम वो टेंस बताते हैं जब कोई काम शुरू पहले से हुआ है, ठीक है, और अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। परफेक्ट मीन्स इसमें हैज़ हैव का यूज़ है, कंटिन्यूस मीन्स इसमें V1 प्लस ING का यूज़ है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। द स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस मॉर्निंग, ओके। सो दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ओके, प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम और रेस्ट ऑफ द sentences, okay। They have been running for 2 hours, okay। He has been working in the field since 9 o'clock, ठीक है। अब ये फॉर और सिंस में क्या चक्कर है, क्या डिफरेंस है। सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम, इट डिस्क्राइब सम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ। For example, since morning, since Monday, since 1978, since 4 o'clock, etc. Meaning some point of time is given here. Okay. Like next for जो होता है ये period of time होता है। For is used with a period of time, it denotes a length of time in the past till now. For example, for 3 hours, for 5 months, for 2 years, or for many days, etc. Example, they have been working in this company for many years or for 2 years, okay। So this is how we use for or since for representing time. So next is the our examples of present perfect continuous tense, okay। First is I have been writing articles on different topics since morning. Next, he has been reading the book for 2 hours. In this way we have to use has been or have been accordingly. They have been playing football for 1 hour, period of time for use किया है। She has been finding the dress since morning, point of time. He has been studying in the library for 3 hours, period of time है ना। We have been shopping at this fair for 2 hours, again period of time, और we के साथ have been हमने use किया है, okay students। So in this way we have studied present perfect continuous tense also students। So I hope all of you will watch it sincerely and get maximum benefit out of it, okay। So watch it, follow it and have maximum benefit. Thank you and have a nice day.